त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। Hari Om, dear devotees. Welcome to the day 4 of our Navarathri puja 2022. If you are ready, let's begin with the purification procedures. Sprinkle water on the puja items and yourselves. Om apavitraha pavitro va sarvavastangatopi va yasmaret pundarekaksham sabhayabhyantaraha suchihi. Now put water in your right palm and sip once with each mantras. Om Keshavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Now wash hands with each of the following chant. Om Rishikeshaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Madhusudanaya Namaha. Now put your kus ring on your ring finger of your right hand. Om Pavitresto Vaishnavyo Saviturvaha Prasava Utpunam Yachidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhi Tasya te Pavitra Pate Pavitra Putasya Yat Kamaha Pune Tachakeyam. Now put Chandan Tika on your forehead. Om Chandanam Vandyate Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harate Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Now light your Lakshmi diya. Om Bodhipatvam Brahmarupa Andhakara Nivaraka Imam Maya Kritam Pujangriya Stejo Pravardhaya Om Deepaya Namaha. Now sprinkle water in front of your diya and meditate on Dharti Mata. Om Prithivi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvam Vishnuna Dhrita Tvancha Dharaya Man Devi Pavitram Kurucha Asanam. Now we are going to do sankalpa. Take some flowers, white rice and a drop of water in the palm of your right hand. We appeal to Bhagwanji for blessings and prosperity in our lives. Hari Om Tat Sat Namaha Paramatmane Shri Purana Purushottamaya Srimad Bhagavato Mahapurushasya Vishnuragyaya Pravartamanasya Shri Brahmane Dvitiya Praharardhe Shri Shweta Varaha Kalpe Kali Yuge Kali Prathama Charane Dakshin Africa Khande. Takes the name of your province. Amukha Prante. Takes the name of your town. Amukha Nagare. Takes the name of your address where you are. Amukha Sthane. Ashwin Mase. Shukla Pakshe. Chaturthi Tithau. Guruvar Vasare. Name of your Gotra.
Amukha Gotra Utpanna. Take your Rashi name. Amukha Namni. Swasti Vachan Shantipat. Laghu Gauri Ganesh Puja. Laghu Kalash Puja. Laghu Naugraha Puja. Laghu Shivji Puja. Lakshmi Mata Puja. Evam Satkarya Karma Aham Karishye. Offer the flower on the Vedi. Now we are going to recite Swasti Vachan and Shantipat. So take some flowers, white rice and drop of water again. Harihi Om Swastina Indro Vriddashravaha Swastinaha Pusha Vishwavedaha Swastina Starkshur Arishtanemihi Swastino Brihaspatir Dadatu Om Payah Prithivyam Paya Oshadeshu Payo Divyandarikshe Payo Dha Payasvatihi Pradeshah Santu Mahyam Om Vishnuraratamasi Vishnoho Snaptraisto Vishnoho Shurasi Vishno Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetava Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwadeva Devata Brihaspatir Devatendro Devata Varuno Devata Om Dyo Shantir Antarikshvagam Shanti Prithvi Shantirapah Shantir Oshadaya Shanti Vanaspataya Shantir Vishwadeva Shantir Brahma Shanti Sarvagum Shanti Shantireva Shanti Sama Shantir Edhi Om Vishwani Deva Savidar Duritani Parasuva Yadbhadanandana Yasuva Sushantir Bhavatu. Offer the flowers on the Vedi. Now we are going to do Avahan for Ganesh Bhagavan and Gauri Mata. So take some flowers and Akshat in your hand again. Om He Ramba Tvame Yehi Ambika Trayambakatmaja Siddhi Buddhi Pate Trayaksha Laksha Labha Pituhu Pitaha Nagasya Nagahara Twangana Raja Chaturbhuja Bhushitah Swayudhar Divyaihi Pashankusha Parashvadhaihi Avahayami Pujartham Raksharatham Mama Kratoho Ihagatya Grihanatvam Pujang Kratuncha Rakshame Om Gananandva Ganapatigvam Havamahe Priyanantva Priyapatigvam Havamahe Nidhinantva Nidhipatigvam Havamahe Vaso Mama Ahamajani Garbhadhamattvamajasi Garbhadam Om Bhurabhuva Swaha Ganapadaye Namaha Om Ambe Ambike Ambalikena Manayati Kasyana Sasasya Shvakaha Subhadrikam Kampilavasinim Om Bhurvaswaha Ambikayai Namaha. Offers the flowers by Ganesh Murti. Now we are going to do Abahan for Kalas Varun Devata. Hold some flowers and white rice in both hands and let's invite Varun Devata. Om Tatvayami Brahmana Vandamanastada Shaste Yajamano Havirbhihi Ahiramano Varuneha Bodhyurusha Gvam Samana Ayuhu Pramoshihi. Offers the flowers by the Kalash. Now we are going to do Naugraha Pratana. So take some flowers and Akshat in your hand again. Om Brahma Muraris Tripurantakari Bhanuhu Sashi Bhumisuto Buddhasya Guruscha Shukraha Shanirahu Ketavas Sarve Graha Shantikara Bhavantu. Offers the flowers on the Vedi. And now we are going to do Pratana for Shivji. Take some flowers and Akshat again in your hand. Om Namah Shambhavaya Cha
मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवाय नमः. Offer the flowers by Shivji's Murti or on the Bedi. Now we are going to do a complete puja for Lakshmi Mata. Take some flower and rice in your hand and let's meditate on Lakshmi Mata. Om Yasa Padmasanastha Vipula Katitati Padma Patrayatakshi Gambhira Vartanabhi Stana Bharanamita Shubhra Vastrottariya Ya Lakshmi Divya Rupa Mani Kachidai Snapita Hema Kumbhaihi Sanityam Padmahasta Mama Vastu Grihe Sarva Mangalya Yukta. Offer the flowers by Lakshmi Mata's Murti. Now take more flour and rice, and this time we are going to do Avahan for Lakshmi Mata. Om Sarvalokasya Janani Shulahastan Trilochanam Sarvadeva Mayimesha Devyam Avahayamyaham. Offer the flowers. Now take more flour and rice and let's invite Mataji to take her asan. Om Tapta Kanchana Varnobham Mukta Mani Virajitam Amalang Kamalan Divyam Asanam Pratigriyata. Offer the flowers to Mata. Now offer water for Padya, washing Mataji's feet. Om Gangaditirtham Sambhutam Gandha Pushpakshateryutam Padyan Dadamyan Devi Grihanashu Namostute. Offer water for Arghya. Om Ashtagandha Samayuktam Swarna Patra Prapuritam Arghyam Grihanam Adatam Mahalakshmi Namostute. Now pour water for Achmanam. Om Sarvalokasya Ya Shaktir Brahma Vishnavadibhistuta Dadam Yachmanantasyai Mahakalyai Manoharam. Pour water for Snana. Om Mandakinyaha Samanitai Hema Muruhavasitai Snanam Kurushva Deveshi Salalascha Sugandhibihi. Offer Panchamrit. Om Panchamrita Samayuktan Jahanavi Salilam Shubham Grihana Vishwa Janani Snanartham Bhaktavatsale. Now pour water for Shuddhodaka Snan. Om Ganga Saraswati Reva Payoshni Narmada Jalaihi Snapito Vasimaya Devi Tatha Shanti Kurushwame. Offer raw cotton as Vastra. Om Divyambaranno Tanhi Kshomantvati Manoharam Diyamanam Maya Devi Grihana Jagadambike. Offer another raw cotton as Upavastra. Om Kanchu Kim Upavastrancha Nana Ratnaihi Samandvitam Grihana Tvam Maya Dattam Mangale Jagadishwari. Offer Madhuparka. Om Kapilandadhi Kundendu
धवलं मधुसंयुतं स्वर्णपात्रस्तिञ्चयापि मधुपर्कं गृहाण मे. Offer a mala or just flowers. Om Ratnakankanavaidurya Muktaharadikani cha Suprasannena manasa Dattani Swikurushva bho. Offer Chandan Tika. Om Shri Khanda Garu Karpura Mriganabhi Samanvitam Vilepanam Grihanashu Namostu Bhaktavatsale. Offer Rakta Chandan, Chandan with Kumkum or any red color. Om Rakta Chandana Sammishra Parijata Samudbhavam Maya Dattam Grihanashu Chandanam Gandha Sanyutam. Offer Sindur. Om Sinduram Raktavarnancha Sindura Tilaka Priye Bhaktya Dattam Maya Devi Sinduram Pratigrihiyatam. Offer Kumkum. Om Kumkumam Kamadandivyam Kumkumam Kamarupinam Akhanda Kama Saubhagyam Kumkumam Pratigrihiyatam. Offer Abir. Om Abirancha Gulalancha Chova Chandanam Evacha Abhirena Rachita Devi Yataha Shanti Prayachame. Offer flowers. Om Anadara Parijata Din Patalinketaki Tatha Maruvamo Garanchaiva Grihanashu Namostute. Offer Pushpamala, a flower garland or just flowers. Om Padma Shankha Japa Pushpai Shatapaitrei Vichitratam Pushpamalam Prayachami Grihanatvam Sureshwari. Offer Durva grass or just flowers. Om Vishnavadi Sarvadevanam Priyam Sarva Shushobhanam Kshirasagara Sambhute Durvasvi Kuru Sarvada. Offer a tulsi leaf. Om Tulasi Hema Rupancha Ratna Rupancha Manjarim Bhavamoksha Pradantubhyam Arpayami Hari Priyaha. Offer Sugandhit tail, any fragrant oil which is sattvic or just perfume. Om Tailani cha Sugandhini Travyani Vividhani cha Maya Dattani Lepartham Grihana Parameshwari. Do Aarti with Agarbatti. Om Vanaspati Rasotpanno Gandhadhayam Sumanoharaha Agreyah Sarvadevanam Dhupoya Pratigrihiyatam. Do Aarti with Diya. Om Karpuravarti Sanyuktam Grita Yuktam Manoharam Tamonashakaram Deepam Grihana Parameshwari. Now wash your hands. Om Hasta Prakshalanam. Offer Naivedya, sweet food or fruit. Om Naivedyam Grihatam Devi Bhakshya Bhojya Samanvitam Shadrasar Anvitam Divyam Lakshmi Devi Namostute. Offer water for Achmanam. Om Shitalan Nirmalan Toyam Karpurena Suvasitam Achmyatam Mama Jalam
प्रसीद त्वां महेश्वरी. Offer fruits. Om Phalena Phalitam Sarva Trailokyam Sacharacharam Tasmat Phala Pradanena Purnaha Santu Manorathaha. Offer tambula, bitter leaf, bitter nut, cloves, and a piece of camphor. Om Ela Lavanga Karpura Nagapatradiviryutam Pungi Phalena Sanyuktam Tambulam Pratigriyatam. Offer a coin. Om Hiranya Garbha Garbhastham Hema Bijam Vibhavasoho. Now do Aarti with diya. Om Chakshurdam Sarvalokanam Timirasya Nivaranam Aarti Kyam Kalpitam Bhaktya Grihana Parameshwari. Om Yanikani Cha Papani Brahmahatya Samani Cha Tani Tani Vinashyanti Pradakshina Pade Pade. बोलो दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता की जय. कोई जब फूल चढ़ाए तेरे नाम गाए, जो मन में दीप जलाए. मेरी शारदा मेरी माँ, मेरी शारदा मेरी माँ. कोई जब फूल चढ़ाए तेरे नाम गाए, जो मन में दीप जलाए. मेरी शारदा मेरी माँ, मेरी शारदा मेरी माँ. शारदे माँ तेरे रूप हजार, शारदे माँ तेरे रूप हजार. शारदे माँ पुकारे तो शक्ति माता आए, शारदे माँ पुकारे तो शक्ति माता आए. कोई जब फूल चढ़ाए तेरे नाम गाए, जो मन में दीप जलाए. मेरी दुर्गा मेरी माँ, मेरी दुर्गा मेरी माँ. दुर्गे माँ तेरे रूप हजार, दुर्गे माँ तेरे रूप हजार. दुर्गा माँ पुकारे तो काली माता आए, दुर्गा माँ पुकारे तो काली माता आए. कोई जब फूल चढ़ाए तेरे नाम गाए, जो मन में दीप जलाए. मेरी लक्ष्मी मेरी माँ, मेरी लक्ष्मी मेरी माँ. लक्ष्मी माँ तेरे रूप हजार, लक्ष्मी माँ तेरे रूप हजार. लक्ष्मी माँ पुकारे सरस्वती माता आए, लक्ष्मी माँ पुकारे सरस्वती माता आए. कोई जब फूल चढ़ाए तेरे नाम गाए,
जो मन में दीप जलाए। मेरी अम्बे मेरी माँ, मेरी अम्बे मेरी माँ। लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए। हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम, भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम। अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम, अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं हम। लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए। हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। घर हमारे माँ एक बार आ जाइए, घर हमारे माँ एक बार आ जाइए। हम गरीबों की किस्मत बना जाइए, हम गरीबों की किस्मत बना जाइए। हमको संसार में है तेरा आसरा, हमको संसार में है तेरा आसरा। डाल पर हम दया दृष्टि माता जरा, डाल हम पर दया दृष्टि माता जरा। लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए। हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। तेरी कृपा से किस्मत बदल जाएगी, तेरी कृपा से किस्मत बदल जाएगी। जिंदगी की मुसीबत भी टल जाएगी, जिंदगी की मुसीबत भी टल जाएगी। तू चमत्कार जब भी दिखाती है माँ, तू चमत्कार जब भी दिखाती है माँ। रंग को राजा पल में बनाती है माँ, रंग को राजा पल में बनाती है माँ। लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए। हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए।
दिन दुखियों को आंचल तले जब लिया, दिन दुखियों को आंचल तले जब लिया, दुख की रातों को तूने दिवाली किया, दुख की रातों को तूने दिवाली किया। जो भी दुखिया शरण में तेरी आ गया, जो भी दुखिया शरण में तेरी आ गया, सारे जीवन का तुझसे माँ सुख पा गया, सारे जीवन का तुझसे माँ सुख पा गया। लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। Hari Om all. We are going to recite the stuti in chapter 4 of Durga Saptashati. तो यह स्तुति इंद्र और आदि देवताओं ने गाई है. They sang the stuti after Mahishasur and his warriors were defeated by Mataji. So let's read from verse 1 up to verse number 23 today. Okay? Om Rishiruvacha Shakradaya Suragana Nihatet Virye Tasmin Duratmani Surari Balecha Devya Tam Tushtubuhu Pranatinamra Shirodharam Sah Vagbhi Praharsha Pulakot Kamacharu Deha Devyaya Tatam Idam Jagatatma Shaktya Nishesha Deva Gana Shakti Samuha Murtya Tam Ambikam Akla Deva Maharshi Pujyam Bhaktya Natasma Vidadhatu Shubhani Sanah Yasya Prabhavamatulam Bhagavan Ananto Brahma Harascha Nahi Vaktumalam Balancha Sa Chandika Akhila Jagat Paripalanaya Nashaya Chashubha Bhayasya Matinkarotu Yashrihi Swayam Sukritinam Bhavandeshwa Lakshmi Papatmanam Krita Dhyam Hrideshu Buddhi Shraddha Satang Kulajana Prabhavasya Laccha Tantvanatasma Paripalaya Devi Vishwam Kim Varnayam Tavarupam Achintya Metat Kinchati Viryamassurakshayakari Bhuri Kinchahuveshu Charitani Tavadbhutani Sarveshu Devya Suradeva Ganadikeshu Hetuhu Samasta Jagatam Trigunapi Dosher Nagyaya Se Hariharadi Virapya Para Sarva Ashraya Akhilam Idam Jagadancha Bhutam Avyakrita Hi Parama Prakritistvam Adhyah Yasyaha Samasta Surata Samodirnena Triptim Prayati Sakhaleshu Makheshu Devi Swahasi Pitriganasya Tripti Hetur Uchcharise Tvamata Eva Janhe Swadhacha Ya Mukti Hetur Avichintya Mahavratatvam Abhyasya Se Sunyat Indriya Tattva Sarehe Moksharti Bhir Muni Virasta Samasta Doshar Vidyasi Sa Bhagavati Paramahi Devi Shabdatmika Suvimalarja Jushan Nidhanam Udgita Ramyam Adipatava Pam Cha Samnam Devi Trayi Bhagavati Bhava Bhavanaya Varta Cha Sarva Jagatam Paramarti Hantri Medhasi Devi Vidita Kila Shastra Sara Durgasi Durga Bhausagara Naur Sangha Shrihi Ketabari Hrideka Kirtadivasa Gauri Tvameva Shashimoli Krita Pratishtha Ishat Saha Samamalam Paripurna Chandra Bimbanukari Kanukotkamat Kanti Kantam Atyadbhutam Prahitam Mattarusha Tathapi Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasuren
दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यत शाङ्खसद्रश्चवीयन्नः सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतत् अधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्म च भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्मान् यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तेः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता एभिर्हतैर्जगतु पैति सुखन्त तैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युम् अधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनम् अहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्भिः खड्ग प्रभानि कर विस्फुरणैस्तथोग्रहे शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयम् अंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोक्यतान्तते तत् दुर्वृत्त शमनं तव देवी शीलं रूपं ततेतत् अविचिन्त्यमतुल्य मन्ये वीर्यञ्च हन्त्री हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितेव तया त्वयेथं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतत् अखिलं रिपुनाशनेन रातं त्वया समर मूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदासुरारिभवं नमस्ते ओम चंडिकाय नमः। रेशम का परिधान है मुकुट सजा है भार रेशम का परिधान है मुकुट सजा है भार मोती की माला गले नैना बड़े विशाल माँ लक्ष्मी नैना बड़े विशाल सोने जैसा रूप है जैसे हो दिनमान सोने जैसा रूप है जैसे हो दिनमान धवल पुष्पमाला परी लाल लाल परिधान माँ लक्ष्मी लाल लाल परिधान
माँ लक्ष्मी धन बांटती, सबके घर घर जाए। माँ लक्ष्मी धन बांटती, सबके घर घर जाए। जिसका जैसा भाग्य है, वो उतना ही पाए माँ लक्ष्मी, वो उतना ही पाए। तुम जैसी माता नहीं, भरती हो भंडार। तुम जैसी माता नहीं, भरती हो भंडार। जो तुम्हारी पूजा करें, पाए खुशी अपार माँ लक्ष्मी, पाए खुशी अपार। कल्याणी माँ लक्ष्मी, मन की बड़ी उदार। कल्याणी माँ लक्ष्मी, मन की बड़ी उदार। जो मांगे दे दे उसे, जो भी आए द्वार माँ लक्ष्मी, जो भी आए द्वार। जो तुम्हारी पूजा करें, धन वो पाए अपार। जो तुम्हारी पूजा करें, धन वो पाए अपार। दुष्ट या धर्मी के लिए बंद तुम्हारे द्वार माँ लक्ष्मी, बंद तुम्हारे द्वार। दिन धन के चलता नहीं, कोई घर परिवार। दिन धन के चलता नहीं, कोई घर परिवार। इसीलिए माँ लक्ष्मी, पूजन हो हर द्वार माँ लक्ष्मी, पूजन हो हर द्वार। बस इतना धन दीजिए माँ लक्ष्मी हर बार। बस इतना धन दीजिए माँ लक्ष्मी हर बार। हर एक का सम्मान भी कर पाए परिवार माँ लक्ष्मी, कर पाए परिवार। मंगलमय भई मोचिनी, दुर्गा सुख की खान। जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ। जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपिणी का ऐसा प्रकाश। पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश।
दुर्गा परम सनातनी जग की सृजनहार, आदि भवानी माँ देवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सत्य मार्ग प्रदर्शिनी ज्ञान का ये उपदेश, मन से करता जो मनन उसके कटे कलेश। जो भी विपत्ति काल में करे रे दुर्गा जाप, पूर्ण हो मनोकामना भागे दुख संताप। उत्पन्न करता विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका अर्चन जो करे भव से उतरे पार। दुर्गा शोक विनाशिनी ममता का है रूप, सती साध्वी सत्यवंती सुख की कलायनूप। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्र भी दुर्गा के हैं अधीन, बुद्धि विद्या वरदानी सर्वसिद्धि प्रवीण। 1,84 योनियाँ से ये मुक्ति दे, महामाया जगदम्बिके जब भी दया करे। दुर्गा दुर्गति नाशिनी सिंहवाहिनी सुखकार, वेद माता ये गायत्री सबकी पालनहार। सदा सुरक्षित वो जन है जिस पर माँ का हाथ, विकट डगरिया पे उसकी कभी न बिगड़े बात। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। महागौरी वरदायिनी मैया दुख निदान, शिवदूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण। संकट हरणी भगवती की तू माला फेर, चिंता सकल मिटाएगी घरे लगे ना देर। पारस चरणन दुर्गा के झुक झुक माथा टेक, सोना लोहे को करे अद्भुत कौतक देख। भवतारक परमेश्वरी लीला करे अनंत, इसके वंदन भजन से पापों का हो अंत। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। आप सभी दुर्गा भक्तों को मेरा विनम्र प्रणाम। To all you Durga devotees, my humble greetings. We have just heard the recitation of chapter 4 of the Durga Saptashati by Sajil Maharaj, and my discourse on this chapter will now follow. जब देवी माता ने महिषासुर को जीत लिया तो देवताओं बहुत खुश हुए. When Devi Mata killed Mahishasur, then Indra and the other devtas were very happy. और उन्होंने क्या किया? What did they do? Well, they didn't go to the nightclub to celebrate, nor did they get intoxicated by strong drinks. Yes, they did get intoxicated, but by singing Devi Mata's stuti. The reason why they sang this stuti was to express their gratitude to Devi Mata for the defeat of their enemies. Now, at the beginning of this shlok, she is seen with the shankh, chakra, sword, and trident. The conch represents the sound of purity and luster. It removes negative energy
and evil. The trident represents creation, maintenance, and destruction. It represents the past, present, and future. तो यह ध्यानम मंत्र हमें दुर्गा माता पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है. So this Dhyanam mantra enables us to focus now on Durga Mata. While Indra leads the gods in praise, the ecstasy of their devotion causes their hair to stand on end. They ask Durga Mata, how should we describe you who has an indeceiwable form? You are the destroyer of demons. You are the Shakti of this world and the source of everything. तो हम यहाँ देखते हैं कि देवता स्वीकार कर रहे हैं कि दुर्गा माता भी निर्माता है. So we see here that the devtas are accepting that Durga Mata is the creator also. From the image of Ambika, the loving but all-powerful mother, we pass to the image of a goddess whose glory even Brahma, Vishnu and Shiva cannot describe. Here she is referred to as Chandika, the fierce destroyer of evil. The Devtas say that she is the superior reality beyond the comprehension of even the most powerful gods. Now, this doesn't mean that Brahma, Vishnu, and Lord Shiva are incompetent. Let's take an example. When the male is not at home, things will still carry on. But when the female is not at home, then chaos tends to set in. So you see, we do need the kinetic energy in women to drive the static energy in men. श्लोक 5 में देवता कहते हैं कि देवी माता उस घर में रहते हैं जहां लोगों अच्छा नेक काम करते हैं. They ask Devi Mata for buddhi, intelligence in the hearts of the learned. They ask for shraddha, that is, faith in the hearts of the good. So you see, in Devi Mata's puja, the word faith has a very great meaning. We cannot do this puja for outward appearance. We cannot boast that we have abstained from salt for 9 days. We need to have faith and devotion and also modesty, lajja. Through modesty, Devi Mata leads her children to greater harmony and awareness. The Devtas say to Devi Mata that you are the origin of the world, and although you are possessed of the 3 gunas, that is Satogun, Rajogun and Tamogun, they do not control you. In fact, you control them. You are able to rise above this imperfect world. We observe at the beginning of these verses that it begins with praise for Devi Mata and ends with the request, and that they form a picture of a goddess who receives not pacification but love. From the material Ambika, the Devtas request auspicious things. From the fierce Chandika, they ask for the removal of the fear of misfortune. And from the Devi of attributes, they ask for protection. This pattern of praise and requests speaks of a two-way relationship between the Divine Mother and her children, and reminds us that Devi Mata's main concern is her active sustaining aspect within the world. It is said that you are both Swaha and Svadha. By utterance of the word Swaha, you bring satisfaction to all the gods, and you are Svadha as well, who brings satisfaction to all the people who have passed on. Durga Mata is referred to as Bhagavati,
the supreme knowledge, vidya, which causes liberation. And of course, avidya is the cause of bondage. She is the motivating power behind these goals. Devi Mata is referred to as supreme knowledge in verse 10. The phrase embodying the three Vedas reflects the belief that the Rig Veda, Yajur Veda, and Sam Veda are respectively the forms of Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati. This verse also reminds us that the merciful Divine Mother is also the supreme destroyer of pain in the world. Through the power of the Vedas, which are an expression of her own supreme power, the generous Devi Mata engages in giving well-being and prosperity upon the world. श्लोक 11 में कहा जाता है कि देवी माता दुर्गा है, लक्ष्मी है और गौरी है. In verse 11, mention is made of Devi Mata as Durga, Lakshmi and Gauri. So there we have it. Devi Mata performs different functions as she is called by different names. But she is still Devi Mata. We should not differentiate between these forms because they are all manifestations of Devi Mata. A simple example is this. My children call me Mum. My grandchildren call me Nani and Aji. My students called me Ma'am. Puja calls me Mosi. But I'm still the same person. I just take on different roles. श्लोक 12 में देवता कहते हैं कि आपकी मुंह चांद जैसे है, अति सुंदर. फिर भी जब महिषासुर ने इस मुंह को देखा तो उसने उसको मारा. It is said in श्लोक 12 that it is very strange that Mahishasur suddenly struck your gently smiling face that resembles the moon. Why did he do this? She was only trying to restore peace and harmony on earth. Now the same thing happens on this earth in Kali Yuga when women try to restore peace and harmony in their homes. They get verbally and physically abused. And then they are called nagbags. The Devtas also said in verse 14 that to those who live according to Dharma, Devi Mata is generous with the blessings of material rewards, upkeep of families, and honor. When remembered, she increases the righteous acts of the already righteous. She gets rid of the distress of those who live in poverty, suffering, and fear. Even towards those who commit offenses, she is kind. Now, let us compare Mahishasura's rage and anger to Devi Mata's rage. Actually, we cannot equate the two. Mahishasura's destructive rage is just that, destructive. It is hateful and injurious, and evil is the human face of Mahishasura's rage. Devi Mata's rage and anger is righteous on a cosmic scale. Her purpose is to restore happiness to the world by bringing under control the misconduct of the wicked. Bhagwan Sri Krishna said the same thing in Bhagavad Gita. Whenever righteousness, dharma, declines and evil, adharma, rises up, I come forth to protect the good, to destroy the evildoers, and to re-establish righteousness. When resisting evil, Devi Mata grants her grace even upon evildoers. You see, instead of destroying the wicked without hope of being saved, she purifies them by the touch of her weapons so that they may attain redemption. But we must note that no good deed goes unrewarded and no evil deed escapes unpunished. Whether correcting by punishment the wicked or blessing the righteous, she evokes visions
of ravishing beauty, incomparable strength, and infinite compassion. She is a fearsome warrior. She's a fearsome warrior goddess who is hell-bent on the victory of good over evil. At the same time, she is also a loving mother worthy of trust and devotion. Either way, she is generous and always doing good, because even her horrific aspect leads the wicked to redemption. In life, everyone goes through a crisis situation, and we ask, what did I ever do to deserve this? Faith in Devi Mata gives us the inner strength to deal with this crisis situation. How many times did we say things could have been worse? Sometimes physical or emotional suffering may awaken us to the preciousness of life. We learn to appreciate life. The hurt inflicted upon us may awaken us to compassion for others. तो अध्याय 4 से 2 महत्वपूर्ण शब्द निकलते हैं. From chapter 4, 2 important words emerge, and they are praise and thanks. Let's face it, in this world, everyone wants to be praised for the things they do, and they want to be thanked for what they do. But very few stop to praise and thank Devi Mata. हमें हर समय दुर्गा माता का आह्वान करना चाहिए और उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि हम वास्तव में हर समय उनके साथ रहना चाहिए. We must call upon Durga Mata with faith and devotion and make her feel that we really want her to be with us at all times. Today, our Divine Mother feels abandoned in Kali Yuga because some of us never go to her, never prostrate to her, and never convey their gratitude. If we approach Durga Mata with a pure mind, like the Devtas and Indra did, she will give her devotees auspicious intellect, righteous living, prosperity, and wealth. और वह हमें चुनौतियों से बाहर निकालेगी, जैसे उसने इंद्र और देवताओं के लिए किया था. She will pull us out of our challenges, just like she did for Indra and the Devtas. Now, when we go through problems, we turn to Devi Mata. But when our wishes are fulfilled, then we want to celebrate materially. There's nothing wrong with this. But let's take a lesson from the Devtas. They had a problem, they went to Devi Mata. When the problem was solved, they went back to her to show their appreciation. We have to accept and digest the fact that everything is given to us by Devi Mata. When one prepares for an examination, then every morning for that period, one gets up early, reads the Saraswati Chalisa, and gives dhar, which of course is an excellent thing to do. But when we pass and do well, we become an I specialist, the letter I, and say, I learned till 3 in the morning. I got an A aggregate. But we don't realize that it was Durga Mata's energy that drove us to work hard and achieve these results. At the end of this chapter, Devi Mata was very pleased and told the Devas to ask for what they desired. They said that with the slaying of Mahishasur, everything has been accomplished. They said, whenever we think of you, again, destroy our disasters or tragedies. And whenever people sing your praises, may you be gracious towards them. May you lessen their challenges too. These Devtas could have asked for rubies and diamonds, but they did not. They were grateful to Devi Mata, expecting nothing in return. They were grateful that she helped and guided them. You see, gratitude is not merely a verbal expression of thanks.
We can show thanks to Devi Mata by cleaning the mandir, by serving others, by remembering her not only during Navarathri, showing remorse if we have done something wrong. Read and listen to scriptures. Have an attitude of gratitude. Be humble. Stop bad habits. So our deepest gratitude must go to Devi Mata for the wonderful things that she gives us. It is she who really supplies all our needs and takes care of us in every way. Only those who have pure divine love for her will be able to see her hidden hand at all times. As we develop more and more trust in Devi Mata, we see her mercy in even the most trying and difficult situations. What appears to others as a tragedy, the devotee sees as her good fortune, for he sees in the so-called tragedy the hidden hand of Devi Mata. His love for Devi Mata grows by leaps and bounds. भाइयों और बहनों, यह शब्द है जो लगातार हर किसी के द्वारा उपयोग किया जाता है और यह महिला सशक्तिकरण है. Brothers and sisters, there is this word that is constantly used by everybody, and that word is woman empowerment. The Durga Saptashati teaches us about woman empowerment, and rightfully so. Every woman should be empowered. But if we want to be empowered, we should emulate the character of Durga Mata. We cannot be empowered women if we harbor anger, jealousy, and hatred. We cannot be empowered women if we cause problems in families and at our workplace. We cannot be empowered women if we do not instill values of spirituality in our children. So being empowered is not just about gaining material success and climbing up the corporate ladder. It is much deeper than that. We need to firstly live our lives with dignity, values, and of course, our point of departure should always be our scriptures. Then we can by all means go for women empowerment. In conclusion then, may the Shakti of Durga Mata be present in all, women and men. May Durga Mata give us all, men and women, the strength to approach her with humility. Jai Durga Mata. मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करी परुआऊं मेरी आस यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं सब विधि करो सुवास जय जननी जगदम्बिका. सिंधु सुता मैं सुमिरो तोई ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पूरवहु आस हमारी. जय जय जगत जननी जगदम्बा सबकी तुम ही हो अवलंबा
तुम ही हो सब घट घटवासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कई विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन के दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलता सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन है अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहलौ महिमा कहूँ बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहाँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो 40 पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। वे प्रबुलाई कै पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि समधनिया और नहीं दूजा।
प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहुविधि क्या मैं करऊँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्ध उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहूँ नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। केही प्रकार मैं कराऊं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। केही प्रकार मैं कराऊं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहूँ दया की को। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता।
जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासन, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती ता, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता, मैया क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूर्यानंद समाता, पूर्यानंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। प्रदक्षिण। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। विसर्जन प्रार्थना। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्षमा प्रार्थना। ॐ अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मत्कारुण्यभावेन रक्ष त्वं परमेश्वर। बोलो विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। जगत जननी पार्वती माता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण भैया जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। तुलसी माता की जय। गौरी माता, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की जय। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय श्री राम।